अगर कोई जंगल इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है, नाउ इन द नेम ऑफ स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, नो एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड देयर। रिजर्व फॉरेस्ट में रोड्स एंड रेलवेज आल्सो नीड नो क्लियरेंस नाउ। डीप ड्रिलिंग फॉर ऑयल एंड गैस इन फॉरेस्ट लैंड, नो क्लियरेंस रिक्वायर्ड। और सबसे बड़ा मजाक, जूज अब से फॉरेस्ट में गिने जाएंगे। ये है द न्यू फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, जिसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास कर दिया गया है विदाउट एनी ऑपोजिशन। प्रोमिनेंट रिसर्चर्स, सिविल सर्वेंट्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट इस बिल का काफी टाइम से खूब अपोज करते आ रहे हैं, कॉलिंग इट अ मैसिव स्टेप बैकवर्ड्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर इन द कंट्री। इसके बावजूद नो चेंजेस वर मेड इन द बिल। इन फैक्ट द ऑपोजिशन, पीपल हु वी हैव इलेक्टेड एंड गिवन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ आवर वेल-बीइंग, आवर चिल्ड्रंस वेल-बीइंग, नो वन स्टूड अप फॉर इंडियाज फॉरेस्ट इन द पार्लियामेंट। इंस्टेड दे ऑल वॉकड आउट इन प्रोटेस्ट ऑफ नो डिस्कशन on the Manipur violence. मार्च में बिल लोकसभा में आया था, जिसके बाद ideally it should have gone to the standing parliamentary committee, which is headed by former environment minister Jairam Ramesh from Congress. But this step was bypassed by the government. Instead, it was referred to a joint parliamentary committee of 32 members from both houses of parliament and across party lines, chaired by Rajendra Agrawal, a BJP MP. इस कमेटी ने भी बिल में कोई चेंज नहीं बताया. The committee accepted the Union Environment Ministry's inadequate justifications for the proposed amendments and even responses that were not related to the questions that had been asked. मतलब parliamentary process की लेनी देनी की गई है. ऐसा तब जबकि the committee received more than 1300 requests for redrafting the bill. These requests were sent by various stakeholders that included 400 ecologists, 100 retired forest service officers, conservationists, tribal groups, environmental lawyers, activists and citizen groups. In fact, joint parliamentary committee के खुद के 6 members wrote dissent notes against the bill, and still the bill has been passed as it is. Let's have a look at these contentious amendments in detail. इस बिल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसने फॉरेस्ट की डेफिनेशन ही ड्रास्टिकली चेंज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 की अपनी एक जजमेंट में बोला था that a forest includes all land that is not officially classified as forest but satisfies the dictionary meaning of the word, that is any large area with significant tree cover and undergrowth. This eventually led to the creation of a new legal category called deemed forest land. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स को बोला था to identify and notify their own deemed forest. But even after almost 30 years, many states are yet to complete this exercise. Now this bill will reclassify forest areas. ऐसी कोई भी forest land that has not been classed as forest will now not be protected under the Forest Conservation Act. That means it will be open for commercial activity और कोई environmental clearance नहीं चाहिए. Do you know देश में ऐसी कितनी जमीन है? Experts का estimate है that this could be as much as 25% of the country's forest cover. This includes 40% of the Aravalli range, 95% of the Niyamgiri hill range in Odisha, जो कि डोंगरिया कोंड ट्राइब का घर है, which is a particularly vulnerable tribal group. Odisha has the third largest tribal population in the country, with 62 diverse indigenous tribes that includes 13 vulnerable ones. It became the first state earlier this year to allocate an exclusive budget for the Forest Rights Act. और अब इस बिल के बाद the forest dwelling communities that held rights over the forest will be left out of the decision making process. The amendments exempt the government from taking permission from local governing bodies such as gram sabhas for clearances. और ये भी सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग के अगेंस्ट है। 2013 नियमगिरी केस में सुप्रीम कोर्ट reaffirmed the local communities right to have a say, और उसके चलते वेदांता का बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि none of the villages in the area gave consent. अब ये नियमगिरी के जंगल can be taken up for mining again. Tribals are feared to lose their homes, incomes, jobs if these lands are opened for projects. ओडिशा के और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के मेजॉरिटी जंगल आर नॉट नोटिफाइड फॉरेस्ट, और ऐसे कितने ही जंगल, मैंग्रोव, सेक्रेड ग्रूव्स इन द एंटायर कंट्री विल हैव प्रोटेक्शन रिमूव्ड नाउ ड्यू टू दिस बिल. नो एनवायरमेंटल क्लियरेंस रिक्वायर्ड. फिर इस बिल की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है दैट नाउ फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस नो फॉरेस्ट क्लियरेंस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट्स इफ द फॉरेस्ट आर लोकेटेड विद इन 100 किलोमीटर ऑफ द नेशनल बॉर्डर. ये स्ट्रेटेजिक रीजंस काफी ओपन टर्म है एज इट इज नॉट डिफाइंड एट ऑल, एंड सो इट कैन बी मिसयूज्ड टू पुश थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दैट आर डिवास्टेटिंग फॉर द लोकल इकोलॉजी. इसमें ऑलमोस्ट सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाते हैं, ऑलमोस्ट द एंटायर रीजन, देन द हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड एंटायर वेस्टर्न इंडिया. All these places have ecologically sensitive forests that will open up after this bill and threaten the fragile ecosystem of these places. Then the amendment bill further gives exemptions for forest clearance up to 0.10 hectares along railway lines or public roads owned by the central government. फिर reserve forest में zoos, safaris और ecotourism activities के लिए कोई clearance नहीं चाहिए होगी. In fact, this amendment will treat them as land used for forestry purpose. Reserve forest में zoos और safaris के लिए जंगल के बीच buildings आएंगी. उन buildings तक पहुंचने के लिए roads बनेंगी. Power transmission line, vehicular movement, light और नॉइस पॉल्यूशन होगा. इन सब का एक जंगल के इकोसिस्टम पर काफी बुरा असर पड़ेगा. लास्ट ईयर अप्रैल में हरियाणा गवर्नमेंट अनाउंस प्लान्स फॉर अ जू सफारी इन 10,000 acres in the Aravalli range in the Gurugram and Nuh districts. As per experts, this will destroy the native ecosystem of the Aravallis by clearing of trees, vegetation, grasses and other such niche habitats used by the resident wildlife. इस सब के ऊपर compensatory afforestation को भी मजाक बना दिया गया है. मुझे तो यही बात समझ नहीं आती कि एक जंगल जिसमें सालों पुराने बड़े-बड़े पेड़ हैं, उन्हें काट
कर कहीं और पेड़ लगाना दैट विल टेक ईयर्स टू ग्रो। हाउ डज दैट इवन मेक सेंस? अंडमान निकोबार के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो डेवलपमेंट के लिए काटे जाने हैं, उसके अगेंस्ट कॉम्पनसेटरी प्लांटेशन हरियाणा में करने का प्लान है। इवन अ किड वुड टेल यू दैट इट्स नॉनसेंस। बट जंगल काटने में इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डेवलपमेंट नहीं चाहिए क्या? देश आगे कैसे जाएगा? रियली ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ना डेवलपमेंट के लिए, दे आर क्रिएटिंग सच क्रेजी प्रॉब्लम्स टू द एनवायरनमेंट एंड टू अस। अभी पिछले महीने ही उत्तराखंड के 4 धाम प्रोजेक्ट की मल्टीपल लोकेशंस में लैंडस्लाइड्स हुई हैं। द नंबर ऑफ लैंडस्लाइड्स इन दिस रीजन हैज डबल्ड ओवर द इयर्स। जनवरी में वी सॉ हाउ द एंटायर जोशीमठ इज सिंकिंग बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टनल। हिमाचल में पिछले 3 सालों में नंबर ऑफ लैंडस्लाइड्स हैव गॉन अप बाय 7 टाइम्स। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फ्लैश फ्लड्स आए हैं, वी ऑल सॉ दैट। वेस्टर्न घाट्स का भी बुरा हाल है। केरला हैज सीन क्रेजी लैंडस्लाइड्स, सो हैज महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। These jungles, mangroves, sacred groves, all of them act as a carbon sink, जिसकी इस समय हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। सरकार बोल रही है कि this is being done to achieve the target of net zero emissions, but none of the amendments say that. Already forest conservation का बुरा हाल था। Local लोगों से consent already नहीं ली जा रही थी। Already there have been so many protests in the last few years. Goans have been protesting against construction in Molam National Park, Dehradun for Sal Forest, Mumbai for Are, Assam, Arunachal, almost पूरे देश का ये हाल है। ये बिल clearly forest conservation को और मुश्किल बना रहा है। And it's really sad that गवर्नमेंट को इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कितने लोग इसके अगेंस्ट हैं। आम आदमी ही नहीं, एक्सपर्ट्स इसके अगेंस्ट हैं। The only hope is if we all make some noise about it. आपका क्या कहना है इस सिचुएशन के बारे में? Tell me in the comments below and share this video with as many people as possible to make everyone aware about it. After all, हम सबके फ्यूचर का सवाल है।